Good morning, everyone, and welcome to Morning Call. First, we'll start with technical indicators update. If you see yesterday's trading session was a lackluster trading session. If you see it is only 100 points move was there. Nifty opened on a negative note and it took support near 18350 zones, which was earlier acting as a hurdle, which gave a base to the Nifty, but it was hovering near 18400 throughout the trading session. And overall, this move would continue further. Also, this would be a time-wise consolidation in the market for the market. We are making a strength to move ahead. So that could be much possible. And if you see index towards 18,200, 18,000 levels, that is also 18,200 being a 10 EMA also. And that should be an opportunity to be bought. Any dip below 18,000 levels only would now change the trend for the index for going ahead. And on the sectoral front, if we see then banking and IT stocks were only trading positive, that only helped to hold the index higher. Otherwise, a major of the sectors were seeing profit booking and the overall market bet was also negative this way. So on the short to medium time frame, if we see the markets are weekly and monthly charts are set up on a bullish tone, but on the daily charts, if we see then Nifty has little exhaustion and can give a small or minor dip. So any intraday today being an expiry, also any negative or intraday dip should be taken. That should be an opportunity to be taken about. On the Bank Nifty front, also Bank Nifty continues to register a higher high, but also it is also facing hurdles near 42,500 zones. Yesterday it managed to post close about 42,500, but any strength if we see then if a good rally is to be seen, then 42,600, 42,700 is taken, and then 44,000 levels can also be seen in our banking number. Overall, banking stocks are also gearing up for a big move on that. So that on the derivatives front, if we see then yesterday's was a minor short covering was seen in the index to the tune of 2%. That is decline of 3 lakh shares. And in the PCR also we saw a dip from 1.26 to 1.14 levels. And minus on the option front, if we see then 18,500 saw the highest Y in the call front and 18,300 is giving a support to the Nifty and led by 18,000. The Bank Nifty futures, if we see, then there was also short covering to the tune of 3.35%. But PCR also, but there was a rise in PCR from 1.33 to 1.40. So overall on the options front, if we see, then 42,000 is acting as a good base for Bank Nifty with the highest additions over there. And secondly, by 42,500 strikes on the call side. On the stock specific front, if you see, there were three long buildups, that is in HEL, Balrampur Chini, and Siemens with 13%, 9%, and 7% each. And on the short side, if you see in RP Industries, Metropolis, and AU Bank added short, that is of 66%, 43%, and 10% respectively. So coming to the FIs data, FIs are still bullish on the market and they are managing their positions with adding longs in the index to the tune of 18,500 contracts. And that is up to 50, we can say 55,000 contracts overall. So FIs are still positive in the market. So some sideways and consolidation move would be an opportunity to go higher. And the ratio is standing at 65%. On the cash side, if you see, then they sold minus 400 crores in cash and DIS bought to the tune of 1437 crores. Stocks to be kept on radar should be the railway stocks. They are looking nice and they can post for a 10 to 12% upside. For example, rail tail rides in the frontline railway stocks can be focused in, can be traded out. On the SGX front, if you see, then the SGX showing a minor dip to the tune of 60 points. So if we open a negativity and near 18,350, 18,300 levels, so that can be and cushion to be bought in for the day. So that's it from my end. I'll hand over to Archana Madam for further. Thank you, Hitendra. Good morning, teams. A few updates from my side. UK Paints India Limited yesterday announced that it has acquired additional 0.002% stake in Berger Paints. And with this, the company's holding will be at 50.092% in Berger. The company has acquired additional 20 lakh shares that carry voting rights through the open market operation. Currently, we are bullish on the stock and have buy rating on the stock with the target price of 821. On Asian Paints, the company would be setting up manufacturing facility for VAE and VAM in India. This facility would be based on the licensed technology with the tie-up with the Kellogg Brown and Root. KBR is a USD 7.3 billion company based at USA and has presence in 80 plus countries. Currently, we have hold rating on the stock with a target price of 3499. On Wipro, the IT services company has reached an agreement with employee representatives on setting up a European Works Council, EWC. This Wipro's EWC is the first to be established by an India headquartered company, and the creation of an EWC follows a request by employees under the EU directive establishing the opportunity in the companies with more than 1,000 employees across the multiple European locations.
On Aurobindo Pharma, the company has received establishment inspection report from US FDA for Unit 9 and API non-antibiotic manufacturing facility in Andhra Pradesh. This unit was inspected by the US FDA in February 2019 and issued a warning letter in June 2019. The said unit was further inspected by US FDA during July 25 to August 2 and issued a Form 483 with 3 observations. On Ircon International, the company has emerged as the lowest bidder L1 for construction of balanced work of Bahuti Canal project on turnkey basis, including the completion of earthwork of main canal system from RD 18 to 74 kilometers and other ancillary activities. The project was floated by Madhya Pradesh government and value of project is 392 crores. Comes as a positive development on the company's front. On Timken India, the company will set up a manufacturing facility at Bharuch, Gujarat, to manufacture spherical collar bearings and cylindrical roller bearings and components thereof. It already has manufacturing plant at Bharuch, wherein primarily tapered roller bearings and its components are manufactured. So that is again a positive development on Timken India. With this increase in capacity, there should be earning growth and looks positive on the company's financial front going forward. And lastly, on Balrampur Chini Mills, the company has commenced commercial production of industrial alcohol in its new distillery at Maizpur unit with a capacity of 320 KLPD. With the said addition, the total distillation capacity of the company now stands at 880 KLPD. Again, a positive development for Balrampur Chini. So that's it from my side. Now I request Kshitija to take it from here. Thank you, Notik Kshitija. Thank you, ma'am. Good morning, everyone. Few updates from my side. Coal India is targeting 15 million tons sales through the e-auction route in the second half of the current fiscal. So top company officials said yesterday, the coal behemoth had sold around 30 million tons via e-auction for 6 months of 2022 to 2023 financial year. And Coal India's e-auction sales were at 108 million tons in 2021 and 2022. The next update on Hindustan Zinc, Vedanta's group Hindustan Zinc Wednesday said that board has approved the second interim dividend of 15.5 per equity shares for the current fiscal. So total payout will amount 6,549 crore, and the record date for the payment of the dividend is at 24th November. Next update on Page Industry, the apparel maker will invest 290 crore to set up 2 facilities in Telangana. The new units will manufacture garments which include sportswear and athleisure wear, provide employment to 7,000 locals, and 2 proposed locations are White Coal Spintex Park facility in Ibrahimpatnam and Mulugu in Sidip district. The next update on NMDC, the public sector mines is in talks to invest lithium focus exploration farm in Australia to secure offtake for India. The investment in Australia will be through NMDC's Perth-based subsidiary Legacy Iron Ore, which is already doing exploration in iron ore and gold and base metal assets. The next update on Tata Motors, JLR CEO resigns for the personal reason and leaving on December 31, 2022. HDFC raised up to 5,500 crore via bonds. So that's it from my end. Now I will hand over to Prabhakar sir for further updates. Thank you and over to you, sir. Good morning, team. SoftBank, which is a promoter group of Paytm, they are planning to sell 4.5% stake in Paytm for almost $200 million. So the total stake which SoftBank is holding in Paytm is 12.9%. Now the lock-in period is getting in. Normally after lock-in period getting in, many stocks have corrected at least 20-25%. So I expect Paytm also to correct from current level. Yesterday, CNBC has reported that IT department conducted research in searches in Metropolis Healthcare. Yesterday, the stock was down 7.75% with very high volumes. So one has to be very careful. I expect the stock to correct another 10 to 15% from current level. UPL's Advanta and Bunch
they have intention to acquire a combined stake of 40% in Seed Corp HO. So it is a Europe-based company. They are buying it. So positive for UPL because these are UPL group companies. Government has given a notification of windfall profit where the tax on crude oil is increased. Export of the diesel is cut. No, so export of diesel where the tax is cut, it is positive for Reliance, but on crude it is negative for ONGC and Oil India. So that is something we need to look at it. Phoenix Mill Arm gets 200 crores investment from Canada Fund. So that is positive for Phoenix Mill. Phoenix Mill is an operator in most of the malls across India. They have one of the highest malls pan India. So that is it from me. Over to you, Brijesh. थैंक यू सर. अभी हम ये कॉल को एक बार हिंदी में कर लेते हैं. तो पहले स्टार्ट करते हैं यूके पेंट से. तो कल हमने देखा कि एक अनाउंसमेंट आया कि यूके पेंट्स ने उसने बर्जर पेंट्स में 50.09% का स्टेक लिया हुआ है. अब वो उनका जो स्टेक जाके बढ़ा है 50.09.92%. इसके अलावा कंपनी ने एडिशनल 20,000 शेयर्स के भी वोटिंग राइट्स लिए ओपन मार्केट के थ्रू. सो हमारा बर्जर पेंट्स के ऊपर बुलिश व्यू और हमारा जो टारगेट प्राइस है 821 का है. इसके बाद एशियन पेंट्स के ऊपर एक न्यूज है. वहां पे जो उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वो सेटअप कर रहे वीएई और वीए इंडिया में. तो ये लाइसेंस टेक्नोलॉजी है जो टाई अप कर रहे हैं केलॉन्ग ब्राउन एंड रूट के साथ. सो ये जो केबीआर करके बोला जाता है, तो ये यूएस बेस्ड कंपनी है और इनके प्रेजेंस करीब करीब 80 प्लस कंट्रीज में इनके प्रेजेंस है. तो ये पॉजिटिव न्यूज होने वाला है एशियन पेंट्स के लिए. हमारा होल्ड रेटिंग है स्टॉक के ऊपर और इसका टारगेट प्राइस है 3499. ये हमारा टारगेट प्राइस है एशियन पेंट्स में. विप्रो के ऊपर एक अपडेट है. विप्रो में आईटी कंपनी ने उसके एग्रीमेंट जो क्लाइंट एम्प्लॉय के साथ एग्रीमेंट ओवरऑल यूरोप जो आउटस्टेशन इंटरनेशनल जोग्राफिकल रीजन में वो 1000 एम्प्लॉयज से ज्यादा क्रॉस कर चुकी है. तो ये फर्स्ट ऐसा जो इंडियन कंपनी है जो जिनके हेडक्वार्टर्स यहाँ पे इतने ज्यादा है. तो विप्रो के लिए भी एक और ठीक ठाक न्यूज है. अरविंदो फार्मा के ऊपर एक अपडेट है. तो कंपनी ने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आंध्र प्रदेश में प्लान किया है जिसका उनको यूएस एफडीए फरवरी 2019 में मिला था. तो ये जो है तो शायद इसमें से तो ये न्यूज के ऊपर थोड़ा सा स्टॉक में थोड़ा वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकता है. अगला न्यूज है बलरामपुर चीनी के ऊपर. द कंपनी ने उनका नया प्रोडक्शन चालू किया न्यू डिस्टिलरी मजीपुर यूनिट. तो इसका जो कैपेसिटी है 320 किलो लीटर पर डे का है. तो इससे उनका ये पॉजिटिव न्यूज है जो ये प्लान के चलते हुए. तो शायद ये स्टॉक में थोड़ा मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है. टिमकन इंडिया के ऊपर एक अपडेट है. द कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किया है भरूच गुजरात में. सो ये बेसिकली रोलर बेरिंग्स और सिलेंड्रिकल रोलर बेरिंग्स और कंपोनेंट्स के बनाएंगे. सो उनका ऑलरेडी भरूच में प्लांट था. तो ये उसमें एडिशन है. तो ये उनके सेल्स को थोड़ा सा ज्यादा एडवांस करेगा. तो ये पॉजिटिव न्यूज है टिमकन इंडिया के लिए. इसके बाद सॉफ्टवेयर जो पेटीएम का एक अपडेट है जहाँ पे उन्होंने बताया कि वो शायद 4.5% स्टेक बेचने वाले सॉफ्टवेयर. तो बेसिकली ये लॉक इन पीरियड के बाद होता है. तो टोटल उनका जो स्टेक है वो 12.9% है. सो नॉर्मली हमने देखा है जब भी ये लॉक इन पीरियड खत्म होने के जब भी कोई अपने स्टेक बेचता है तो नॉर्मली स्टॉक करेक्ट होता फ्रेश 20-25%. तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद पेटीएम में आपको और थोड़ा सा फॉलो थ्रू सेलिंग देखने को मिल सकता है. तो यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव बायस है पेटीएम के ऊपर.
आईटी डिपार्टमेंट ने मेट्रोपोलिस के यहाँ पे सर्च किया, थोड़ा सा रेड हुआ था, तो ऑलरेडी स्टॉक करेक्ट हो चुका है कल के सेशन में 7.5%। हमें लगता है कि ये जो करेक्शन और हमको देखने को मिल सकते हैं, तो हमारा कॉशियस व्यू है, कॉशियस टू नेगेटिव व्यू बोल सकते हैं, तो मेट्रोपोलिस पे हम ध्यान रखेंगे। फिर यूपीएल एडवांटा के ऊपर है, उन्होंने एक्वायर किया 40% स्टेक सीएट कॉप के ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे यूरोप बेस है। सो इससे उनके बिजनेसेस पे पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, तो इस पे यूपीएल के ऊपर हमारा पॉजिटिव व्यू है। फिर गवर्नमेंट ने विंडफॉल टैक्स के ऊपर जो कट किया है, जिसमें डीजल स्पेसिफिकली डीजल में उन्होंने 13 से उन्होंने 10 रुपीज तक का उन्होंने कट किया है। जो पहला 13 था उसको 10 पे लिया, तो ये रिलायंस के लिए पॉजिटिव न्यूज हो सकता है, जबकि ये कंपनीज लाइक ओएनजीसी और ऑयल इंडिया के लिए ये थोड़ा सा नेगेटिव न्यूज होने वाला है। इसके अलावा हमने ये देखा कि आईसीआईसीआई बैंक के कल के फिक्स डिपॉजिट रेट्स के डेटा आए थे, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने जिनका डिपॉजिट रेट्स 2 करोड़ के ऊपर है, उनका उन्होंने 30 बेसिस पॉइंट से उन्होंने इंक्रीज किया है। फिर बाद में एक अपडेट है आईडीएफसी के ऊपर, तो कंपनी ने बताया है कि जो उनका जो आईडीएफसी लिमिटेड और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो मर्जर होने वाला है, तो उसका वो दोनों इंस्टीट्यूशंस के अप्रूवल्स है। सो नियरली ये जो मर्जर जो होगा, जिससे 4,000 करोड़ कैपिटल का उनको बेनिफिट हो सकता है। और ये शायद ये स्टॉक आज वॉच लिस्ट में देखेंगे। उसके बाद एक अपडेट है एनएमडीसी के ऊपर। तो एनएमडीसी में ये रिपोर्ट्स है कि शायद वो इन्वेस्ट करेगा लिथियम फोकस बेस एक्सप्लोरेशन में, जो फॉर्म ऑस्ट्रेलिया में है। सो ये जो इन्वेस्टमेंट होगा एनएमडीसी के पर्थ बेस सब्सिडरी के थ्रू होगा, और जो ऑलरेडी आयरन ओर और गोल्ड और बेस मेटल के एक्सप्लोरेशन में ऑलरेडी उनका एक्टिविटी चल रहा है, तो एनएमडीसी के लिए शायद एक पॉजिटिव न्यूज हो सकता है। टाटा मोटर्स पे एक न्यूज था कि जो उनकी जो सीईओ है जैगुआर लैंड रोवर के, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है टाटा, वो उन्होंने रिजाइन किया है विद इफेक्टिव फ्रॉम December 31st। सो उसके बाद एड्रेन मार्डल ये है वो जो इंटरिम सीईओ हो गए। तो ये न्यूज के चलते और शायद टाटा मोटर्स पे थोड़ा सा हमको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। हिंदुस्तान जिंक पे एक अपडेट है। तो वेदांता ग्रुप ने बताया कि कल के दिन में बताया कि उनका बोर्ड ने अप्रूव किया सेकेंड इंटरिम डिविडेंड किया 15.50 पर इक्विटी शेयर्स, जो करंट फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। सो इसका जो टोटल पे आउट होने वाला है कुछ 6,550 करोड़ के आसपास है, जो इसका रिकॉर्ड डेट है 24 नवंबर 2022 का उन्होंने दिया हुआ है। सो ओवरऑल पेज इंडस्ट्री का एक अपडेट था कि वो कंपनी 290 करोड़ इन्वेस्ट करेगी, जो प्लान सेटअप करेंगे तेलंगाना में। सो ये जो बेसिकली स्पोर्ट्स वेयर और एथलेटिक वेयर के रिलेटेड होगा, और ये जो वो जोग्राफिकल नेचर में 7,000 एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी, तो ये जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉजिटिव न्यूज हो सकता है। सो ओवरऑल हम पॉजिटिव व्यू मेंटेन करके चल रहे हैं मार्केट में। हो सकता है कि एक्सपायरी के चलते थोड़ा प्रेशर देखने को मिल सकता है, तो लोअर लेवल्स पे सपोर्ट्स पे हम बाय करेंगे। मे बी आज और कल थोड़ा सा प्रेशर होगा मार्केट में, लेकिन जिस हिसाब से हम एफआईएस की जो डेटा देख रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि जो एफआईएस जो इंडेक्स को जो हेज करके जो चल रहे हैं, वो पोजिशंस काफी स्ट्रांग है। तो कहीं ना कहीं वो लॉन्ग पोजिशंस बना रहे हैं, और इवन हमारे जो मार्केट है निफ्टी और बैंक निफ्टी, वो भी कहीं जहाँ पे लॉन्ग टर्म जो चार्ट है, जो मंथली के जो चार्ट है, वो काफी पॉजिटिव है। तो 2-3 दिन के साइडवेज को हम देख सकते हैं, थोड़ा सा स्लाइड करेक्शन आ सकता है। आज वीकली एक्सपायरी है, नेक्स्ट वीक में मंथली एक्सपायरी है, तो ये एक्सपायरी के चलते थोड़ा प्रेशर हो सकता है। लोअर लेवल पे डेफिनेटली बाय करें। पीएसयू बैंक्स में हम फिर से बता रहे हैं, जब भी करेक्शन आएंगे और डिफेंस स्टॉक्स में हमको बाय करके चलना है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर मार्केट का काफी पॉजिटिव है। हो सकता है आने वाले दिनों में या फिर अगले महीने में
थोड़ा टाइम लग सकता है, बट हम काफी पॉजिटिव है मार्केट के ऊपर. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड. थैंक यू. हैव ए नाइस ट्रेडिंग डे.